Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, dear webinars, in our last class we were discussing about unit first, lesson number 2, namely Dhikru Ashhuri Sahabiyatir Rasul. Dhikru Ashhuri Sahabiyatir Rasul, remembrance of the famous female companions of the Prophet, of the Messenger. We were discussing this lesson. We had solved exercise 1, Al-Mufradat, word meanings, and exercise 2, Al-Mufradu Al-Jamu, singular and plural, and exercise 3, Al-Azdat, opposites. Today we will take on translation of the passages. First passage we had solved in our last class. We will recap it, we will repeat it, then we will proceed towards paragraph 2, 3, 4 and 5, and if the time remains and if the time permits, then we will discuss question and answers. This is your paragraph 1. Paragraph 1, he will ask you in the exam, translate the following passage or paragraph in short answer type question and give you 5 marks. Translate and give reference. So in exam he will not ask you about the reference, just he will ask you to translate the passage or paragraph. Here it is, paragraph number 1. As-sahabiyatu afdalu nisa'i hadihil ummah. Sahabiyat, the female companions of the Prophet, are the best women of this ummah, community. وَهُنَّ الْمُسْلِمَاتُ اللَّاتِي تَشَرَّفْنَا بِصُحْبَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. They are those Muslim women who take pride of being with Prophet. وَإِنَّهُنَّ خَيْرُ مِصْدَاقٍ لِكَلِمَةِ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ الَّتِي جَاءَ فِي فَضْلِهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ الصَّالِحَاتِ. And they are the real eligible and most suitable for the word pious woman, which has come in the book and sunnah in their significance, like Muslimat, believing women, as-salihat, believing as-salihat, pious women, and the last phrase is as-salihatu fi zawil Quran. It means the pious women in the light of Quran. This is your paragraph 1. पैराग्राफ 1 में ये बोल रहे हैं कि as-sahabiyat अफजलु निसाई हादिल उम्मा, सहाबियात जो है इस उम्मत की बेहतरीन औरतें हैं, और वो वहुन्नल मुस्लिमातुल्लाती तशर्रफना बि सोहबतिन नबी, और ये वो औरतें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़याब हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शर्फ हासिल करी. व इन्नहुन्ना खैरु मिज़दाक़िन लिकलिमतिल मरअति स्वालिहा, और वो लोग हकीकी तौर पर मुस्तहिक़ है नेक औरत कहलाने के, जो किताब और सुन्नत में उनकी फ़जीलत में आए हैं, जैसे कि मुस्लिमात, मुसलमान औरतें, सालिहात, नेक औरतें, और अस्सालिहातु फ़ी ज़ौइल क़ुरान, यानी नेक औरतें कुरान की रोशनी में. ये है पैराग्राफ 1. नाउ प्रोसीड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ. Paragraph number 2. Do not disturb the screen, please. Here, second paragraph is وَكَانَتْ تُدْعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالطَّاهِرَةِ الْعَفِيفَةِ. She was called in pre-Islamic period by pure chaste.
वकानत ज़ात मालिन कसीरिन व तिजारतिन, she was having much wealth and business. तज़व्वजहा रसूलुल्लाह क़ब्ल बैअतिही, the messenger of Allah married her before prophecy, before his prophecy. فَوَلَدَتْ لَهُ الْقَاسِمُ, she gave birth to Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayya, wa Kulthum, wa Fatima, radiyallahu anhunna. May Allah please with them all. This is your paragraph number 2. What he says, वकानत तुदआ फिल जाहिलियती, उनको पुकारा जाता था ज़माने जाहिली में, बित ताहिरतिल अफ़ीफ़ा, ताहिरा और पाकीज़ा के नाम से, और वो बहुत पैसे वाली और तिजारत वाली औरत थी, तिजारत बड़े पैसे रखने वाली और तिजारत की मालिक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले, बेसत से पहले उनसे निकाह फरमाया, अक़द किया, शादी की। उनसे जो है क़ासिम, हज़रत क़ासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसुम, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना, ये लोग जो है पैदा हुए। दिस इज़ योर सेकेंड पैराग्राफ। नाउ कम टू पैराग्राफ नंबर 3. Paragraph number 3 is वकाना लक़बुहा as-सिद्दीक़ा. Her title was as-सिद्दीक़ा, the truthful. वतुदआ बिल-हुमैरा लिग़लबति हुस्निहा. She was called as the rose. She was called the rose for her attraction of beauty. She was called as a rose for her stunning beauty. ومن فضائلها ما جاء في صحيح البخاري. Amongst her significances which has come in the authentic book Bukhari, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha yawman, that the messenger of Allah said, once the messenger of Allah said to her, Ya Aisha, O Aisha, hada Jibrailu yuqri'uki as-salam. This Jibrail conveying you salam, greetings. This is the passage number 3. What it says, उनका लक़ब सिद्दीक़ा था, उनको हुमैरा के नाम से बुलाया जाता था अपने हुस्न की वजह से, उनके हुस्न की गलबे की वजह से, हसीन और जमील होने की वजह से उनको हुमैरा, गुलाब की तरह पुकारा जाता था। और उनकी फ़जीलतों में से ये है जो सही बुखारी में आई हैं, वारिद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन उनसे फरमाया, ए आयशा, ये जिब्राइल आपको सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। दिस इज़ पैसेज नंबर 3. नाउ कम टू पैसेज नंबर 4. हियर इज़ द पैसेज 4. उम्मुल मोमिनीन उम्मु सलमता रज़ी अल्लाहु अन्हा, द मदर ऑफ फेथ वाज उम्मे सलमा, मे अल्लाह प्लीज विथ हर. हिया कसीरुर रिवायत लिल हदीसी बादा उम्मुल मोमिनीन आयशता. She was the much narrator of the prophetic tradition after the mother of faithful Aisha radiyallahu anha. Wa min afqahi sahabiyati, she is amongst the more aware of the jurisprudence knowledge. wa hiya akhiru man mata min ummahatil mu'minin. She was the last amongst the mothers of faithfuls who died.
She died at last among all the mothers of faithfuls. What it says, paragraph number 4, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप जो है हिया कसीरुर रिवायत लिल हदीस, हदीस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के बहुत रिवायतें आपसे मिलती हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद में आप जो है सहाबिया में बहुत जानकारी रखने वाली थी। अफ़क़ही सहाबियात मसले मसाइल के जो है ना बहुत सारे मामले आप तय करती थी। वही आखिर माता मिन उम्महातिल मोमिनीन, आपका इंतकाल सबसे आखिर में हुआ तमाम उम्मुल मोमिनीन में, तमाम उम्महातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में इंतकाल फरमाने वाली आप हैं, उम्मे सलमा हैं। Now come to the last and final paragraph. इन्ना सहाबियाती लहुन्ना दौरुन अज़ीमुन फ़ी दिफ़ाई अनिल इस्लाम वल हिफ़ाज़ी अला सुन्नतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Indeed, the female companions of the Prophet play a vital role in defending Islam. वल-हिफ़ाज़ी ala sunnatin nabi, and preserving the way of Prophet, preserving the sunnat of Prophet. وَكُنَّا يُشَارِكْنَا فِي الْغَزْوَاتِ يُشَارِكْنَا الْغَزْوَاتِ, they used to participate in battles. يُدَاوِينَ الْجَرْحَى, they treat the injured, and وَيَسْقِينَهُمْ, and they water them. They supply water to them, to the injured. Okay. The 5th paragraph says, बेशक सहाबियात जो है उनका एक अहम दौर है इस्लाम के दिफा में। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिफाजत की, इस्लाम का दिफा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिफाजत की। वो लोग जो है ग़ज़वात में शरीक होती थी और जो ज़ख्मी होते थे उनका जो है इलाज मुआलजा करती थी और उनको पानी पिलाया करती थी। दिस इज़ योर पैसेज। Let's study the translation of the paragraphs. Paragraph number 1. The female companions of Prophet are the best women of this ummah, and they are those women who took honor of being with Prophet, peace and blessings be upon him. They are the best eligible of the word pious women that has mentioned in the book and Sunnah in their significance. Like Muslim women, pious women. The pious women in the light of the Quran. This is paragraph 1. Now come to paragraph 2. Paragraph 2 is on your screen. And she was called as pure chaste even before Islam, in pre-Islamic period. She was having much wealth and business or trade. The Messenger of Allah married her before prophecy. She gave birth to Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayya, Kulsum and Fatima. May Allah please with them all. Next, paragraph number 3 is, and her title was Siddiqa, truthful. She was called Rose Humera for her attraction of beauty. Among her virtues that has mentioned in Sahih Bukhari, once the Messenger of Allah said to her, "O Aisha, this Jibreel conveying you salam," means greeting. Now come to paragraph 4. Paragraph 4 is the mother of faithfuls, Salma, may Allah please with her. She is the most narrator of prophetic tradition after Aisha, the mother of faithfuls. She was more aware of jurisprudence among female companions. She died last among all the mothers of faithfuls. Okay. This is your 5th paragraph.
Indeed, the female companions of Prophet have a significant role in defending Islam and preserving Sunnah, way of Prophet. They used to take part in battles and treat the injured and water them. पानी पिलाते थे. These are the translations of your passages and paragraphs. Inshallah, in our next class we will continue